अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 27 फरवरी 2024 और जैसा कि हम पूरा दिन और इनफैक्ट कल भी इस इशू को फॉलो कर रहे थे। असद अली तूर जो एक सहाफ़ी हैं, कई सालों से पाकिस्तान में सहाफ़त कर रहे हैं, उनको एफआईए से डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया कल यानी पीर के रोज़, और आज उन्हें 5 दिन की फिजिकल रिमांड पे भेज दिया गया है। इस सब के क्या मतलब हैं? क्या हो रहा है इस केस में? असद अली तूर जो एक ज़माने में काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हक में भी बहुत बोलते थे, जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते थे करप्शन के और इन सब चीज़ों की, ये 4 साल पुरानी बात ही है। इनके साथ ये क्यों हो रहा है? ये जानने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं बैरिस्टर एहसन पीरज़ादा। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ द शो, पहले भी आ चुके हैं। लेकिन इस बार जो लीगल टीम है असद तूर साहब की, उसका हिस्सा बन के ये हमारे सामने आए हैं। असद पहले तो ये एहसन पहले तो ये बताएं कि असद अली तूर के साथ क्या, व्हाट इज ही चार्ज्ड विद, इशू क्या है बेसिकली एहसन? Thank you, Ali, for having me, and it's good to be back. So essentially, Ali, what is absurd is that he's been charged with Section 9, Section 10, and Section 24. I'm going to take the liberty कि मैं जरा थोड़ा सा इसको highlight कर दूं. Section 9 और 10 क्या है? 9 कहता है glorification of an offense. Now, when you talk about an offense, किस offense? Offense of terrorism. तो essentially the government is charging कि असद अली तूर ने ग्लोरीफाई किया है एक सर्टन क्राइम को जो कि टेररिज्म के जुमरे में आता है। सो फर्स्ट चार्ज ये है। सेकंड जो सेक्शन 10 है वो कहता है साइबर टेररिज्म, कि वो जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म है उसको साइबर के थ्रू असद ने उसको हाईलाइट किया है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी विद इन द गवर्नमेंट एंड आउटसाइड। और फिर जो सेक्शन 24 है वो बात करता है आपकी साइबर स्टॉकिंग की। इसकी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड है, सो आई जस्ट वांटेड टू जस्ट पीपल के अंडरस्टैंड करें कि हो क्या ना। अब Asad presented himself for in order to, before the FIA cyber crime wing के वो investigate कर सके। कल की बात है, कल जब दोबारा असद ने अपने आप को 445 के करीब प्रेजेंट किया था तो हम लोग वहां जब पहुंचे 905 907 के करीब एक शख्स नीचे आते हैं, गार्ड थे, और उन्होंने बताया कि असद को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया है। नाउ क्यों अरेस्ट किया है ऐसे शख्स को जो गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ कोऑपरेट कर रहा है, ऐसे शख्स को जिसकी 78-year-old मदर घर के अंदर मौजूद है और उनका कोई और सहारा नहीं है, और उसके abscond करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। वो इस तरह का कोई खदशा एग्जिस्ट करता था। वो एक आई थिंक मैसेज है, एंड दैट मैसेज इज बीइंग सेंट टू एवरी जर्नलिस्ट दैट आप अपने आप को इतना ना समझें, आपके 1 लाख फॉलोअर हैं या 5 लाख हैं या 2 मिलियन है, यू आर नॉट we will get you. So play ball, otherwise we'll sort you out. And I think they're just trying to sort him out. Um, and I don't think so that's going to work, quite frankly speaking. But to answer your question, they're trying to settle score. ऐसे में देखें, पाकिस्तान के अंदर सही हम समझते हैं कि कुछ चीजें कहीं नहीं जा सकती, कुछ लोगों को टारगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हजारों सहाफी इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इदारों की तनकीद भी कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आपके ख्याल से असद अली तूर को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, आपने इदारों का जिक्र किया। असद अली तूर को एक टेस्ट केस के तौर पे टारगेट किया जा रहा है। ये अम, मुझे लगता है खदशा है कि लिस्ट मौजूद है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप वो होते ना कि when they came after me you did not say anything when you know, so ये वो वाला सीन है कि अब देखते हैं कि कौन कितना यू एन क्राई क्रिएट करता है, बिकॉज आई थिंक एवरीवन इज गोइंग टू बी टारगेटेड, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग। जब क्या बाय एवरीवन से क्या मुराद है आपकी? आई मीन ऑल द जर्नलिस्ट। आई थिंक ये एक मैकेनिज्म है वेयर पहले पॉलिटिशियंस थे, इतनी पोलराइजेशन थी, जिन पॉलिटिशियंस को हाथ नहीं लगाया जा रहा था वो सेलिब्रेट कर रहे थे, जो जिन लोगों को हाथ लगाया जा रहा था वो पहले अपने अपोनेंट्स की इस तरह की कैप्टिविटी को सेलिब्रेट कर चुके थे। तो वो तो चले डिवाइड थे। नाउ देयर इज एन एफर्ट टू डिवाइड द मीडिया, एंड आई थिंक अगर इस करने में कामयाब हो गए तो फिर वकीलों की बारी आएगी। वकील ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं। So essentially, this is an effort to actually divide people across these across the divide कि civil society भी divide हो जाए। That's what I think. And देखिए असद को क्यों अरेस्ट किया? असद, you agree with him or not, असद कुछ ऐसी बातें कर जाता है जिससे आप और मैं शायद एग्री ना करें, लेकिन
उसका ये हक है, वो बोल सकता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है, ये जमहूरियत है। आर्टिकल 19 को या तो सस्पेंड कर दिया जाए या फिर बता दिया जाए कि आप अगर ये लाइन क्रॉस करेंगे तो हम आपके ऊपर कतल लगाएंगे और आपको जेल में फेंक देंगे। जब एक इदारा अपने आर्टिकल्स, जो आर्टिकल 244 और 245 के अंदर उनका जो रोल इन्विसिज है, उससे बाहर निकलेगा, तो वो उसके ऊपर तनकीद होगी और तनकीद करनी चाहिए, और मैं भी तनकीद करूंगा, और हर जी शऊर इंसान जो अल्लाह ताला की जात से डरता है और उसको ये मुल्क जो है वो प्यारा है, वो भी उसके ऊपर तनकीद करेगा। जब आप, तो फिर मसला होगा जब सुप्रीम कोर्ट, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट, मेरी ब्रेड एंड बटर उससे रिलेटेड, आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बट इदारों के, खासतौर पे कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं, आप उसको क्रिटिसिज्म का आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हो, दोज आर पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, आप किसी जज के ऊपर इल्जामात लगाना, यू नीड टू बैक दैट अप, ये एक अलग चीज है, बट फॉर दैट अगर आपको लगता है कि वो लाइन क्रॉस हुई है, तो फिर वो जज या तो सो मोटो एक्शन ले सकता है, या फिर जो डेफेमेटरी लॉज बहुत सिविल में और क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एफआईए को एक टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करके यू ट्राई एंड सॉर्ट पीपल आउट। आई जस्ट थिंक दैट्स absolutely uncalled for, and I'm not suggesting कि इसके पीछे कोर्ट होगा, I don't know, I really hope and I don't expect this from superior court judges, but whoever is doing this, वो कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के ही चला रहे हैं, एंड उससे जो तो या बदनामी कौन, है, हु इज डूइंग दिस देन आपके ख्याल से? I think that the answer to this question is something that you and I will be picked up by a unlicensed, sorry, without a number plate, एक डाला आएगा और आप और मुझे उठा के लेके चला जाएगा। हमने पहले भी इस मौजू पे बात की है, हमने आपसे बात की आर्मी एक्ट के ऊपर भी, कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए। बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं पाकिस्तान में एहसन, इन द पास्ट 6 मंथ्स, ईयर, मई 9 से भी आप अगर लगा लें, तो इलेक्शंस के बाद स्पेसिफिकली जो भी कुछ हुआ, आपने जो देखा, क्या अगर आप 6 महीने पहले उस चीज को देख रहे होते, क्या आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ही वो सब चीजें हुई, कि आपने क्या चीज ऐसी नोटिस की लुकिंग बैक ओवर द पास्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर? I expected things to get better. I thought कि sanity will prevail. एक certain incident हुआ है, शायद वो incident नहीं होना चाहिए था, उसकी गुंजाइश मैं खुद believe करता हूँ। I don't believe in violence. हम हर protest का एक certain limits होती हैं, certain thresholds होती हैं। अगर एटलीस्ट कोई threshold क्रॉस किया तो आप कानूनी तौर के ऊपर कार्रवाई करें। मेरा एक बड़ा सिंपल सा स्टैंड है, I don't believe in Army Act being applicable to civilians. That's my standard position. I still believe that. लेकिन बाकी कानून है, और उसके तहत आप एंटी टेररिज्म के अंदर, किसी भी और कानून के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने ब्रीच ऑफ पीस किया है, या किसी कानून की किसी शिक को पामाल किया है अपने एक्शंस के थ्रू। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, जिस तरीके से प्रिवेंट किया जा रहा है फ्रॉम अदर पार्टी, फ्रॉम पीटीआईज कैंडिडेट्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स to from taking from taking oath is absolutely absurd. I mean, what are we trying to do with this country? हम किस तरह आगे चलेंगे, मेरी समझ से तो बाहर है। This cannot continue for a very long time. I genuinely think अगर अभी तक होश के नाखन नहीं लिए, तो from a legal point of view, from a economic point of view, there is no certainty at this point in time, and this is not going to lead the country forward. We're just, this is getting more and more scary every single day. असद अली तूर को 5 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है। इमरान रियाज खान के ऊपर करप्शन चार्जेस लाई गई हैं किसी पुराने केस को लेकर। तो एंड दीज आर टू अपोजिंग साइड्स के ये सहाफी हैं, असद अली तूर, इमरान रियाज खान, इनके दरमियान भी इख्तलाफात रह चुके हैं माजी के अंदर। तो आपके ख्याल से ये एक ट्रेंड आपने कहा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि टेस्ट केस का आपने जिक्र किया, तो what do you think कि क्या यानी is the court in abeyance? सुप्रीम कोर्ट कोई डेफिनेटिव चीज एक्शन नहीं ले सकता इसके ऊपर, या नहीं लेना चाहता? उनके ऊपर भी दबाव का आपने जिक्र किया, what do you think is happening there? I think Supreme Court is not going to get involved. Quite frankly speaking, after what has happened, the kind of criticism जो उन्होंने face किया, I think ये शायद उनके लिए इतना बड़ा issue ना हो, because they've faced far worse criticism as far as the judgment is concerned. But Ali, let me just take the opportunity and highlight something very
interesting over here, and I think something very scary for all the journalists over here. In the order passed by the honorable court and the request of remand filed by the FIA, you know what they're seeking? They want Asad Ali to actually Asad Toor to actually disclose his journalistic sources. They're after his gadgets. They're after his accounts. So Asad का जो case बहुत different है. वो इसलिए कि Asad is the I know Asad for some time now. I don't think so Asad is going to compromise on his journalistic sources or disclose any information. And quite frankly speaking, I will not do that. अगर मेरे लैपटॉप को confiscate करने की कोशिश करे, मेरे clients के personal data हैं, I have a duty towards them as well. I will probably not. I'll face the music and face the consequences. I don't believe this is allowed. There's an Athar Millah साहब की judgment जिसके अंदर वो categorically distinction create करते हैं media personnel की and so on and so forth. Essentially 5 दिन का रिमांड इसलिए दिया गया है ताकि असद से उसकी डिवाइसेस, उसके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के क्रेडेंशियल्स लिए जाएं और उसको सोर्सेस को एक्सप्लोर किया जाए, वो कौन कौन लोग हैं जिसको इन टच है. फ्रॉम अ स्ट्रिक्टली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ लॉ एक सर्टन तहत अगर आर्टिकल सेक्शन 33 है आपका पीका का, वो अलाउ करता है आफ्टर द सीकिंग कंसेंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट to seize and property and get the data. But as far as this is concerned, that does not refer to a journalist. You know, for journalist, uski source is sacred. You know, it's an unspoken bond. It's an unspoken promise that you tell me something I'm not going to disclose. इसकी basis के ऊपर journalism survive करता है. So हाँ, मगर वो ये आर्ग्यू कर सकते हैं ना कि ये these aren't traditional journalists, कि इनका किसी इदारे से ताल्लुक नहीं है, ये तो YouTube के ऊपर हैं. He works with Sama. Actually, he still works with Sama. So Asad ka hai. Asad has been involved and engaged by different media channels and so on and so forth. So irrespective of that, I mean, you know, if you're a member of the press club, you're a journalist. Mariam Aurangzeb cannot जिस तरह वो हमेशा positions लेती हैं कि वो ये journalist है, ये नहीं है. This is not your job. This is for a body which is independent of the executive to determine कौन journalist है, कौन नहीं है. हाँ, मैं journalist नहीं हूँ because I'm not registered with the PFUJ. अगर मैं register हो जाऊँ तो maybe I also am a journalist. No one can say कि I'm not. That is for a body to decide कि मैं हूँ या नहीं हूँ. जिस तरह एक वकील को एक Pakistan Bar Council determine करती है कि whether he is a lawyer or not. You know, no Tom, Dick and Harry can stand up and say कि I'm not a lawyer. You know, or I am a lawyer for that matter. So again, I'm just saying that Asad ka case is a very, very critical case. I think अगर इन्होंने अल्लाह ताला ना करे और मुझे यकीन है sources तक पहुंच के तो फिर ये एक ऐसा domino effect होगा that this is going to create a very difficult situation for a country in which journalists are persecuted, are tortured, are harassed, are blackmailed, you know. And sadly, you know, we just came from protest जो कि organize हुआ था press club के बाद. बाहर इतनी polarization है कि हम अपने opinion की basis के ऊपर सही, और I do not support PTI, by the way. I do not. आप critical रह चुके हैं PTI के दो. Very critical of PTI. I will not be worth my salt if I do not defend someone from PTI whose rights are being violated. How would I face you know or wear this black coat or face Allah Ta'ala in the hereafter if I have the ability to defend someone? I don't believe in his go. I don't, you know, conform to his political point of view. But he has the right to be treated as a basic human being. You cannot drag her by her hair and drag her on the roads. And असद के खिलाफ क्या है कि वो IG को criticize करते हैं, आप government officials को criticize करते हैं. हम IG को फूल पकड़ाएं जब वो हमारी बच्चियों को की तस्लील करते हैं और हमारी माओं के ऊपर हमले कराते हैं और घरों के इस तकद्दुस पामाल करके इस तरीके से बेहयाई अगर लफ्ज, I'm really sorry I'm using this word and I don't want to, but quite frankly speaking, this is absolutely horrendous what has happened. And you don't have to conform to a political party's ideology to say कि ये गलत है. तो हम उन ऑफिसर्स को की तारीफ तो करने से उनको क्रिटिसाइज ही करते हैं. एक जर्नलिस्ट का काम है to criticize, to inform the public of what is actually happening. So if you're going to try and penalize someone for expressing his point of view and analyzing the whole situation and determining कि एक सरकारी अफसर जो कि सरकारी अफसर है उसके सर के ऊपर भूत सवार है और उसको लगता है कि वो बादशाह बन चुका है पंजाब का, और उसको रियलाइज कराना कि नहीं तुम 22 ग्रेड के सरकारी मुलाजिम हो, so I think that is absolutely right. That's perfect. That's his job. You cannot penalize him for that. And if you want to, then there are people like us who are idiots
who will protect him and try to preserve his constitutional and fundamental rights. Simple as that. आपने जिक्र किया पहले कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर शायद कुछ ना कर सके और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की आपने बात की एहसन, तो एक ट्वीट शेयर की थी असदली तूर ने ही कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से, जहां पे उन्होंने एक मग जो उन्हें गिफ्ट मिला था, सरीना ईसा ने दिया था आर्टिकल 19 और 19A प्रेस फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके उसका। तो उस वक्त उनको इस बात का अंदाजा था, चीफ जस्टिस को, उनकी फैमिली को, कि जी ये चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको प्रिजर्व करना चाहिए। तो क्या हमने माजी में भी देखा सुओ मोटो एक्शंस और इनिशिएटिव्स लिए जाते थे बाय जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस। ऐसे मौके पर आपके ख्याल से कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकती क्या बाय द सुपीरियर जुडिशरी? I think so, Ali. There are a lot of things that happen behind the scene, जिससे आपको पता लग जाता है कुछ हो रहा है, कुछ मूवमेंट हुई है। बताएं, जैसे मसलन मिसाल के तौर पे there are ways the judges communicate with the government or something, or express their reservation, and that channel essentially is the highest law officer of the country, which is the Attorney General of Pakistan. So I don't know what discussion they've had, if they've had a discussion or not, but I'm against suo moto notices. I just think that's an absurd power. It should not be there. हमारी अपनी institutions को हमने बेहतर करना है, हमने उनके ऊपर concentrate करना है। अगर ये suo moto वाला trend चल पड़ा, जिस तरह हमने देखा था, तो चीनी की भी और तेल की भी और घी की भी इन लोगों ने prices fix की थी। That's an absurd trend, and I just don't think this should be the normal recourse. You know, हमारे the fact of the matter is we need competent people to investigate these things, and we need people with integrity जो कि persecute ना करे किसी बंदे को, जो कोई किसी को निशाना ना बनाए, किसी को appease करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, बल्कि कानून के मुताबिक चीज करें। अब यही तो हमारा प्रॉब्लम है, that if there is a person who is appearing before you, who is actually taking part in the investigation, who is cooperating with you, then what reason do you have to arrest him at 9 o'clock? I mean, आप एक दिन आपने 8 घंटे उसको इन्वेस्टिगेट किया है, फिर वो एक दिन आपके पास पहले खुद उससे, चल के बिल्कुल। आया है। एग्जैक्टली, फिर आपके पास खुद चल के आया है, दोबारा आपने आपको आपके पास सरेंडर किया है, वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है। what is the reason to arrest him? So I just think वो there is a रीजंस lot लिस्ट that किए थे ना उन्होंने, साइबर क्राइम और इन सब के, आपने जो शुरू में रीजंस, वो जो तो चार्जेस है ना जी, चार्जेस हैं, वो तो चार्जेस है। बिल्कुल। There's a trial that is going to happen. There is a trial that is going to happen. These are mere allegations, and अगर allegations मेरे ऊपर कोई भी लगा दे, तो they will remain mere allegations unless and until they're proved in the court of law. Simple as that. So allegations की basis के ऊपर, yes, you have the prerogative to take certain actions, but उसकी एक litmus test decided है, जो कि मगर वो there is a ऐसे सिस्टम में जहां पे एलिगेशन ही आपको इतना रगड़ देती है निजाम के थ्रू, यानी कोर्ट केसेस यहाँ पे तो सालों तक चलते रहते हैं। तो असद तूर को क्या, उनको इन केसेस के थ्रू अंडर डिटेंशन, रिमांड, क्या आप देखते हैं कि उनको इस प्रोसेस के थ्रू अब रखा जाएगा, घसीटा जाएगा आपके ख्याल से? I think it's यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर असद deny करेगा that I'm not going to give you the access of my journalistic sources or my credentials as far as my social media account is concerned, then legally speaking they might have ground to further get an extension in the remand and so on and so forth. But किस हद तक जाएगा at the end of the day? You know, I mean, किस हद तक I जाएगा आप बताएं? किस हद तक legally speaking there is a reason कि वो उसको detain कर सके on the pretext के that he is not allowing us to what do you call it? He's not allowing us access to his sources, and obviously I don't want to prejudice his case, and I don't want to disclose any legal strategy that we might have in mind. But you know, there are ways of addressing those issues and getting him out of that thing, and countering this illegitimate and illegal demand of the FIA. चलें, असद तूर एक जर्नलिस्ट है, एक सहाफ़ी है, एक इंडिविजुअल है। जैसे मैंने पहले भी कहा, और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ पिछले 1 साल के अंदर-अंदर, स्पेशली 9 मई से लेके अब तक, हज़ारों की तादाद में, हमें एग्ज़ैक्ट नंबर शायद इतना क्लियरली ना पता हो, लेकिन हज़ारों की तादाद में इस वक़्त पाकिस्तानी डिटेंशन में हैं या जेलों में हैं, इंक्लूडिंग पीपल लाइक यास्मीन राशिद, तैयबा राजा, सनम जावेद को चली गई, निकल गई वो बहुत अरसे बाद, खदीजा शाह भी निकल गई, मगर हजारों एस्टिमेट है लोग अभी भी मौजूद हैं इस सिस्टम के अंदर,
जेलों में इनकार्सरेटेड विदाउट देयर राइट्स और फ्रीडम्स। कुछ की तो आर्मी एक्ट के अंडर ट्रायल्स भी हुई हैं। इनफैक्ट अगर वर्डिक्ट नहीं भी आया उसके बावजूद, क्या देखते हैं आप ओवरऑल मंजर इस वक्त ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, और क्या हम इससे बाहर निकलने की तरफ जा रहे हैं? अब इलेक्शंस भी हो गए हैं, क्या आप देखते हैं कि जी इसमें और मजीद शायद एक फोर्स के साथ आए ये चीज विद वेंजेंस ऑलमोस्ट? क्या नजर आता है आपको? I don't see this is going to continue. मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता इस तरह। मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारी उन इदारों ने जिनका ये काम नहीं है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में एक 1970 के इलेक्शंस थे जिनके अंदर हमारी जो अवामी लीग थी जिसने वन आई बिलीव 36 सीट्स हासिल की थी फ्रॉम 139 सीट्स इन द ईस्ट पाकिस्तान, and they were not given majority. They should have gotten the government, but अवामी नेशनल पार्टी और अवामी लीग को उन्होंने कह दिया था ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जमात है, और जितने भी लोग इलेक्ट हुए हैं वो एमएनएस तो हैं। ये जनरल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सारे एमएनएस तो हैं, बट दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज एमएनएस ऑफ अवामी लीग। ये हिस्ट्री है हमारी। सो ये ब्लंडर्स जो हैं इसने मुल्क को डिवाइड ही किया है। ये जिस तरीके से हमारे जो बलोच आए हुए थे, अगर रियासत उनसे प्यार और मोहब्बत से बात करती, उनकी बात ना मानती, लेकिन थोड़ी शफकत करती, थोड़ी प्यार करती, थोड़ी उनसे इंगेज करने की कोशिश करती, उनकी चीजों को कुछ अभी एड्रेस हाल ही करने में की। प्रोटेस्ट हुए थे, मारंग बलोच भी जो हाल ही में जिसका हिस्सा थी। प्रोटेस्ट हुआ था। आई रोट अ पीस ऑन इट ऑन डॉन एज वेल, एंड मैं जी ये कह रहा बिल्कुल। था कि एक जो दरार है वो इतनी बढ़ चुकी है, और रियासत जो है आई डोंट नो कौन लोग इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी ईगो इतनी बड़ी है कि आप चाहते हो कि बच्चियों के ऊपर ठंडे पानी फेंका जाए सुबह 2 बजे, और अपनी दारुल हुकूमत से उसको डिपोर्ट कर दिया जाए बसों में फोर्सफुली डाल के बलोचिस्तान। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ I don't know. This is so absurd. It looks as if there's a kid running the show who doesn't know what to do, and he just wants to. He feels something and he wants it done. So अगर तो इस तरीके से चलना है तो then we are looking at a very serious problem, which I don't believe anyone, and I don't intend to. There are other people who judge a patriotism of you and me. I'm not one of those people. I believe everyone wants to do something for this country, and maybe their approach is wrong, and it's important for us to say their approach is wrong. There's no point of saying कि नहीं ये बिल्कुल सब कुछ कर सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं हमने ये बोला तो हमारे सर पे डंडा पड़ेगा। their approach मगर is काउंटर wrong. पॉइंट तो एक है ना इसके अंदर, ऐसा काउंटर पॉइंट ये है कि भाई आपके इंतखाबात हो चुके हैं, साफ शफाफ ना हुए हों, डाका भी डला हो शायद मैंडेट कम, मगर अब आपके पास वजीर आला पंजाब भी हैं मौजूद, आज वजीर आला सिंध ने भी ओहदा उठा लिया है मुराद अली शाह ने, या उठाने वाले, यानी इन्हीं दिनों के अंदर 28 की बात करें, सॉरी कल होगा वो। तो अब एक जमहूरियत की तरफ एटलीस्ट सरफेस विनियर के ऊपर तो चीजें मूव हो रही हैं ना। काउंटर पॉइंट इसका होगा। सो अली, आई पर्सनली बिलीव कि जब हमारा जो 29th को बाद हमारी जो हुकूमत आ जाएगी, और जो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाती है, जो भी बनाता है, और प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा और ट्रांजिशन हो जाएगी, आई थिंक थोड़ी सैनिटी विल प्रिपेयर एंड टेम्परेचर्स विल कूल डाउन, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग. I'll say something very controversial and something I don't believe in. I don't feel right in saying, I don't feel comfortable in saying, but I think we would have to forget these elections. And I'll tell you why. The problem is कि जब भी आप कभी वैक्यूम क्रिएट करते हो ना, तो वैक्यूम हमेशा फिल होता है। इस टाइम के ऊपर हमारे जितने भी इदारे हैं, ईसीपी हो गया, हमारी पुलिस होगी, हमारी ब्यूरोक्रेसी होगी, हमारी जुडिशरी होगी, वो इतनी वीक है दैट देयर एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ वैक्यूम, और वो वैक्यूम फिल हो जाता है उस इदारे से जिसका ये काम नहीं है। सो अनलेस एंड अंटिल वी गो फॉर एब्सोल्यूट वेरी स्ट्रिक्ट आउटराइट रिफॉर्म्स एंड ट्राई टू इंश्योर कि हमारे इदारे थोड़े से मजबूत हो जाएं, थोड़ा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हमारे इलेक्शंस कभी भी अनफेयर फेयर नहीं होंगे। ठीक है, हमारे ये जो आप और मैं डिस्कशन करें, आज से 10 साल भी हम यही डिस्कशन कर रहे होंगे। सो अब देखना ये है कि कोई भी आ जाए, हर बंदे को थोड़ा हौसला लेके, हम कभी भी डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलने नहीं देते, बिकॉज वी फील हैप्पी व्हेन द गवर्नमेंट इज बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय पीपल हु शुड नॉट बी ब्लैकमेलिंग देम। The other party wants to utilize that opportunity to ensure कि किस तरीके से हम पावर में आ जाए। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, जब तक आप जमहूरी सेटअप को, चाहे वो गलत आया सही आया जो भी आई डोंट, उसको जब तक आप सपोर्ट नहीं करते ना, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा जमहूरी सेटअप हमेशा गलत आता है। हमेशा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि आप उसको जस्टिफाई या लेजिटिमेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। आई मीन क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, यू विल बी
फूलिंग योरसेल्फ अगर आप कहेंगे बहुत अच्छे हमारे इलेक्शंस हो गए और ये बिल्कुल सब कुछ निज़ाम ठीक है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ निज़ाम हमारे पास यही है अली। हमने इसको ही बेहतर करना है और मैं यही कहता हूँ लोगों को कि प्लीज़ प्ले योर रोल कि आप अपने निज़ाम को बेहतर करें। आप लोगों को या ख़ास तौर पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पुश करें कि आप अपनी सीपीसी को मेंट करें, आप डिजिटाइज़ेशन की तरफ आएँ, आप सीडीए के पास जाके आपको अपनी फाइल ना ढूँढनी पड़े, आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना फी पे करें और आपको पता लग जाए, आपका डिजिटाइज़ सर्टिफिकेट आ जाए कि आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। छोटी-छोटी चीज़ें जिससे आप अपनी चीज़ों को रिफॉर्म कर देते हैं। उससे फॉर एग्जांपल आई बिलीव एक एएसपी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये ताकत नहीं होनी चाहिए कि एसएचओ को वो चेंज कर सके। होनी ही नहीं चाहिए। हाउ इज़ इट कि एक एक बंदा एक्सीडेंट होता है तो एसएचओ मुअत्तल, ये क्या? आई मीन हमने अपने इदारों को खुद तबाह करके रखा हुआ है और हम लोग फिर कहते हैं कि वो पुलिस वाला उसको चपेड़े मारे बिकॉज़ नहीं मारेगा तो उसको आप मुअत्तल कर दोगे और बाहर फेंक दोगे। वो क्या करे? I mean, there is another side of the coin as well, right? So that's what I'm trying to highlight that we need to genuinely change our system, and unless and until we don't do that, Article 244 and 245 violate hota rahega, which pertains to what army should be doing. Simple as that. That's a good point to leave it at that. Thank you so much, Ahsan J. Pirzada, barrister who's representing part of the team of Asad Toor. अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होती रहेगी। Thank you very much. Assalamu alaikum. आपके सामने एहसन पीरजादा ने जिस तरह कहा कि देयर इज ऑलवेज अनदर साइड टू एवरीथिंग। हम कभी कभार जज्बात में आके कैरी आउट यानी एक बहल जाते हैं थोड़ा कुछ हद तक कि हम इस बात का अंदाजा नहीं लगाते कि देयर इज ऑलवेज अनदर साइड। सिस्टम अगर खराब हुआ है या खराब किया गया है तो इट्स अ टू वे स्ट्रीक, वो दोनों तरफ चीज चलती है। उसके अंदर यू हैव टू मीट समवेयर इन द मिडल, यानी बीच में कहीं मिलना पड़ता है और यही कोशिश चल रही है फिलहाल। असद तूर साहब की टीम जो है कि वो किसी तरीके से ये जो चार्जेस उनके खिलाफ लाई गई हैं फॉर वट एवर रीजन इनको वेकेट कराए या इनको चैलेंज करे, लीगल प्रोसेस अपनाए इस चीज के लिए। मगर फिलहाल आपको असली तूर स्टिल इन ऑन अ 5-day रिमांड, प्रिजन के अंदर उनको भेजा गया है, यानी कस्टडी के अंदर रखा गया है। और एहसन पीरजादा जो कह रहे थे कि उनके दिमाग के अंदर अभी भी ये बड़ी एक चीज मौजूद है कि ये सिचुएशन अगर जल्द रिजॉल्व नहीं हुई, उम्मीद है कि एक बार पार्लियामेंट आ गई इन पावर, इन प्रोसेस आ गई फरवरी 29 को, वो कह रहे हैं कि अगर सही है, गलत है, चोरी की है, नहीं भी है, सिस्टम को इवॉल्व होना पड़ेगा और ये हकूक को प्रिजर्व करना पड़ेगा अपने सिटीजन्स के लिए। ऐसी चीज नहीं चल सकती। फिलहाल इतना ही। आपके लिए अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। यूट्यूब के ऊपर, मैं ट्विटर के ऊपर भी इसको डालने की कोशिश करूंगा आपके लिए। अल्लाह हाफिज।